अरे स्टॉप क्यों करी प्रभु? अरे मैंने पॉज किया था, इसीलिए तो पॉज किया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। ये इसको थोड़ा चेंज करो, थोड़ा नीचे करो। हाँ, स्टार्ट करें। So reports or certifies any cost audit report or cost certificate getting it examined without getting it examined by without getting it examined by either himself or camera. Okay. यहाँ पे relative word I made you add. Why? Because relative word is not written in your material. तो यहाँ पे चारों cases में you, your partner, your firm, and relative expressing an opinion in substantial cases, then you are immediately disqualified. Means professionally disqualified. Clause number 4 is over. Clause number 5 and clause number 6 को simultaneously लिखते हैं so that you can understand the importance of both. Fails to disclose और यहाँ पे आएगा fails to report material facts and here material misstatements known to him known to him which was very much needed to disclose in financial statements here which was very much needed for users for their attention. Because you can't hide any fraud and error, otherwise you are guilty. You are being appointed only to detect the frauds and errors and you are hiding it. So that is clause 6. So main point here to underline is it is material facts and यहाँ पे disclose है, यहाँ पे report है, material misstatement. Common thing is both are known to him. This is clause 6 and clause 5. Clause 7 did not apply due diligence and mostly was negligent while discharging his professional duties. Did not apply due diligence and mostly was negligent while discharging his professional duties. तो इसमें भी एक नोट लिख लो. This clause can be expressed with
Okay. So this clause can be expressed with all other clauses. With all other clauses. Clause number 8. uh, Failed to obtain 6. हाँ भाई, कौन से सस्ते नशे करके बैठे हो? ऑलरेडी 8th पे पहुंच गए अपन. कौन बोला 6th? कौन बोला था? ओ हेलो. ये कितने हैं? 5 है ना? Okay, failed to obtain sufficient and appropriate. Failed to obtain sufficient and appropriate information and explanation required for expression of opinion. Failed to obtain sufficient and appropriate information and explanation required for expression of opinion. ब्रैकेट में लिख लो मैंडेटरी फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स. Mandatory for drawing conclusions. Clause 9. Clause 9. Failed to draw. Fails to draw attention on material departures from generally accepted cost audit practices. Fail to draw material departure from generally accepted cost practices means didn't perform the procedures properly or effectively. Clause 10. Fails to keep client's money in a separate bank account other than. So what are the two cases other than you need not operate a separate bank account? Other than payments to be made in short time. Yes, payments to be made in short time or advance fee or remuneration. Advance fees or remuneration. So that brings an end to your part 1. ठीक है, अभी एक काम करते पार्ट 2. सेपरेट बैंक आपको एक अलग से खोलना पड़ेगा बैंक अकाउंट. एक और बैंक अकाउंट खोल के उसमें सेपरेटली लगो. मतलब द आइडिया इज यू शुड नॉट मिक्स योर इंटरेस्ट with his interest. Let's say for example in my bank account already 10 lakhs are there. You as a client given me 50 lakhs more. तो 60 lakhs के ऊपर इंटरेस्ट आएगा ना, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू सेग्रीगेट योर इंटरेस्ट एंड माई इंटरेस्ट. बट इफ आई हैव अ सेपरेट बैंक अकाउंट and where no my money is not landed, I can keep your money in that account so that as and when, so need not open account in the name of client. You have to open a separate bank account. That's it. To keep your income and his income separately. That's it. So that if he comes and if you have to return, you should be in a position to return it in a proper manner. Right?
Part 2, everyone. What is part 2? Professional misconducts in relation to members in general. नहीं, सर्विस में नहीं है अम्मा, मेंबर्स इन जनरल. सर्विस वाला सिर्फ शेड्यूल 1 में ही है सेपरेट. तो हियर 4 क्लॉजेस, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 and clause 4. Now, please tell me, without looking at the book, what was clause 1? If you violating or you are doing contravention of sections, guidelines and regulations issued by council, right? Violation or contravention to sections, guidelines and regulations made by institute or council. So this applies to both of them, right? Clause number 2. Clause number 2, breaking the confidentiality. But by whom? Member in service during the employment. So, right? Discloses confidential information acquired during course of employment without whose permission now? Without employer's permission. And clause 3 provides information knowing it to be false. Provides easy लग रहा है chapter ये, right? Provides information to institute, to council, to DD, to BOD, to DC, to AA, to QRB, right? Knowing it to be false. इसके ना नीचे अपन लिख रहे हैं क्रॉस रेफर इट with 231. Cross refer it with 231. And इसके नीचे लिख देते हैं क्रॉस रेफर इट विथ 112. Cross refer it with 112. Now, the clause number 4 defalcates or embezzles the money received in professional capacity. Defalcates, FALCATES, defalcates or embezzles the money received in the professional capacity. Clause 4. Done, sir? And let's write the last clause. फिर part 3. OM in relation to again members in general. OM in relation to members in general. This was PM in relation to members in general, and this was what? PM in relation to members in practice. Shall we write? एक ही point है इसमें दो.
सो convicted for civil or criminal offense with imprisonment, क्या लिखेंगे भैया? Exceeding 6 months or less than equal to 6 months? Exceeding 6 months. Done. So that brings an end to our all the 29 clauses. So now you know that these are those things which you need not do after getting employed or after getting coming into practice. So these are the areas which you should avoid. Otherwise anybody can make the complaint. और अभी अपन पढ़ेंगे कि ये complaint कौन करता है, किसको करता है, and who are the authorities who takes care of this complaint. First make a note of it. आज अपन पढ़ेंगे BOD के बारे में, DC के बारे में, appellate authority के बारे में. ठीक है? These are the three authorities we have to discuss. उसके बाद I think tomorrow we should be in a position to wind up about this chapter, including some of the questions which we'll practice in the class. Okay, what kind of questions they may ask you in the examination. I'll see if it is given there. Otherwise, I'll bring it to you. ठीक है? Shall we start now? चलो next topic करते हैं. What is the next topic? ये देखो. In the next topic, we have to understand three parties. Everyone. What is the party number 1? DD. ये कौन है? DD साहब कौन है? ये starting point होता है जहां पे अपनी complaint की जाती है. The first person to whom you can make a complaint against me, whether I'm in practice or whether I'm in service, is DD. DD situation को evaluate करता है. DD can reject the application also, reject the complaint also. But if the DD thinks that कि yes I am guilty, तो DD सोचेगा कि if it is schedule 1 guilty, if I'm guilty under what? Schedule 1, तो case will be forwarded to BOD. If I am guilty under schedule 2 or both, what is the point number 2? Schedule 2 or both, then case will be given to DC. Who is DC? Disciplinary committee. Who is BOD? Board of Discipline. So again repeat, the first person to whom we make a complaint is what? DD, Director of Discipline. He may reject the complaint, or if he thinks that complaint is genuine, then he will evaluate the offense. If the offense is relating to guilty under schedule 1, so my case will be forwarded to BOD, and if the offense is under the guilty under schedule 2 or both, case will be given to disciplinary. अब डिसिप्लिनरी कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बाद में हैंडल करेंगे. अब अपन पढ़ते हैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन. अब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास केस आया मेरा, तो आई एम गिल्टी अंडर शेड्यूल 1, एनी ऑफ द 14 क्लॉजेस में आई एम गिल्टी. तो व्हाट द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन विल डू? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन विल आल्सो डू द इन्वेस्टिगेशन if I am guilty or if I am not guilty. If I am not guilty, the case is closed. But if I am guilty, there are three powers given to the board of discipline. Point number 1, he can reprimand me. Reprimand का मतलब होता है कि making you guilty in front of other practicing CMS by conducting a seminar. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉन्वोकेशन में आपको एज एन एग्जांपल सेट किया जाता है कि दीज आर द थिंग्स यू शुड नॉट डू. मतलब रेप्रीमेंडिंग मी, आपको मतलब लास्ट वार्निंग देना, दैट इज कॉल्ड रेप्रीमेंडिंग. पॉइंट नंबर 2, he may cancel your COP and your membership number up to 3 years. How many years? No, sorry, up to 3 months, right? And it can also impose the fine to you up to rupees 1 lakh. तो 1 लाख का फाइन it can cancel and it can reprimand you. That is called BOD. पहले अपन पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. What is the concept? Constitution of Disciplinary Committee, Board of Discipline and Disciplinary Committee. पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ नेम ऑफ द काउंसिल अवॉइडिंग कॉस्ट. ये है सारे सेक्शंस विच यू हैव टू डू. आई एम लुकिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टू द, दैट्स इट. इतना ही है. ओ तेरी, तुम्हारे को कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है. अरे एक सेकेंड, इतना ही है क्या? यू डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो है टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन.
But where is the constitution? How many members are there? How many members are not there? यार सही है, तुम्हारा पोर्शन थोड़ा कम हो गया लग रहा फिर थोड़ा सा. तो एक्चुअली रिसेंटली ओनली इट वाज एडिड ऑल द डिसिप्लिन दैट व्हाट थिंग आई टोल्ड यू आई नो बिकॉज आई हैव taught in the previous batch. तो ये 2016 में था बट आई टोल्ड यू कि शेड्यूल वन है तो इट गोज टू वर्ड बीओडी. देयर वाज अ ह्यूज चार्ट. एक सेकंड. हाँ भाई तुम्हारी तो ऐश होगी थोड़ा. पोर्शन खत्म हो गया तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी. प्रोफेशनल एथिक्स. ये देखो. This was your earlier professional ethics where everything we have done all these clauses and all. But it won't be good if you want to take a printout. That is the reason. That's the reason this time I'm using this white background. तो अगर आपको फ्यूचर में in case you lost your book or you want a printout, at least directly आप उसका printout ले सकते हो. I'll share this PDF file with you if you want. ये देखो. This is what I was telling you. This chart. कि first the complaint is made to whom? DD. If it is schedule 1, it will go to whom? BOD. If it is schedule 2 or both, it will go to whom? Disciplinary committee. अगर schedule 1 को गई तो what he can do? Reprimand the member, remove the name up to 3 months and fine up to rupees 1 lakh. This is what I was telling you. और अगर ये disciplinary committee है तो it can be permanently also and the fine amount is what? 5 lakhs. उसके बाद इसकी composition भी है, you know. There is a, this is schedule 1 के all the clauses. उसके बाद there is a composition as well. All these clauses after. It was a huge chapter earlier. ये हमने ऑलरेडी मैंने तुम्हें ऑलरेडी लिखवा दिया था सेक्शन 447 का पेनल्टी. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस. चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थोड़े. हाँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर. ये पढ़ो बी क्वेश्चन प्लीज रीड. अच्छा सॉरी. अ प्रैक्टिसिंग लॉयर स्पेशलाइजिंग इन एंटी डंपिंग केसेस कम्स टू informal understanding with an independent practicing cost accountant to assist him in preparing the accounting statements to support his case in agrees to share. A practicing lawyer wants to share his fees with you and it is independent practice to assist him in preparing amount stating to support his case in and agrees to share. अच्छा you are sharing. अब बताओ पहले तो ये बताओ इज इट अ प्रैक्टिसिंग सीएमए और नॉन प्रैक्टिसिंग. तो डेफिनेटली मेंबर इन प्रैक्टिस का क्वेश्चन है. तो या तो ये शेड्यूल 1 के पार्ट 1 का या शेड्यूल 2 के पार्ट 1 का. तो ये शेयरिंग वाला फीस कहां पे आता है? 211 या 311? यहां पे पहले देखो यहां पे हो क्या रहा है. अ प्रैक्टिसिंग लॉयर स्पेशलाइजिंग इन एंटी डंपिंग केसेस comes to informal understanding with whom? An independent practicing cost accountant to assist him in preparing what? मतलब वो इसको हेल्प करेगा in preparing the accounting and to support his cases. मतलब lawyer will support me and agrees to share his what? Fees on which basis? तो is he sharing his fees or you agree to share your fees? He is agreeing to share his fees with you. तो इट मीन्स आर यू शेयरिंग और एक्सेप्टिंग? इसलिए आंसर 311 का है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और इसमें आप 411 भी डाल सकते हो एक्चुअली. क्यों? क्योंकि इफ इज अग्रीइंग टू एंटर इनटू यू एंटर विद यू व्हाट? पार्टनरशिप. अगर वो आपके साथ पार्टनरशिप करता है तो इन दैट केस यू कैन राइट द 411. डिड यू गेट द क्वेश्चन? सेकंड पढ़ो. A cost accountant gives a certificate of cost for production manufactured by SSI unit owned by entirely by his son. You or your partner or your firm is substantially
interested and you are expressing an opinion. This is what 412. What is 412? Clause 4 part 1 schedule 2. Are you able to see the question now? Third करते हैं. C पढ़ो, D पढ़ो, sorry. A cost accountant gives a certificate of cost of production for attaching with the tender of cost plus contract. He comes to know after signing the certificate that his client has won a case with a supplier on account of which the client is entitled to get a refund of what? Substantial portion of the purchase price of the raw material. This certificate is not corrected. Failed to, नहीं, certified or reported without doing examination. तो ये कौन सा हो गया? 212, clause 2, part 1, schedule 2. 7 and 7, of course. Clause 2 and 7. Next पढ़ो. X is a what? Shareholder in PQ Limited holding 100 shares. The company's paid up share capital is 5 crores, 50 lakhs of 10 each. X accepts a certificate work from the company. You are interested in the company? See, X holds how many shares? पहले तो आप disqualified हो. Section number 141 के अंदर. Are you allowed to hold any security or not allowed? Immediate. चलो, even if चलो that companies act को छोड़ते हैं, अभी CWA Act की बात करते हैं. You are already holding how many shares? 100 shares. Company's paid up share capital is 50 lakh shares of rupees 10 each. मतलब कितना हुआ? आपको 10 each के हिसाब से 1000 rupees you are holding. X accepts a certificate work from the company. Can you accept or you are immediately disqualified? But मेरे को ये एक्ट के अंदर बताओ क्या आएगा? 412 नहीं आएगा. Is it substantial or not substantial? तो मतलब आप कर लोगे. भैया ये देखो, पहले वो कंपनी है PQ लिमिटेड, पहले तो आप डिस्क्वालिफाइड ही हो अंडर सेक्शन व्हाट 141. लेकिन अगर मेरे को ये भी अच्छा, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है ये पढ़ो, यहाँ पे आंसर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाउ मच परसेंटेज? 20%. 100 shares out of 50 lakhs comes to what? Not even a 1%. Are you getting the point? Is it less than 20%? तो भैया आप सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं हो, तो यहाँ पे यू गिल्टी और नॉट गिल्टी. नॉट गिल्टी एज पर दिस एक्ट. प्रॉब्लम पता क्या होती है? हम लोगों को कई बार लगता है कि क्वेश्चन गिल्टी के ऊपर ही आएगा, और कई बार आईसीआई आपके साथ खेल जाता है बाय गिविंग द क्वेश्चन इन वाइस वर्सा मैनर. एक्चुअली क्वेश्चन गिल्टी का है, नॉट गिल्टी का है? नॉट गिल्टी. तो नेवर बी अंडर द इंप्रेशन कि भाई ये गिल्टी क्यों नहीं है. तो देयर मे बी अ राइट पर्सन आल्सो हु इज नॉट गिल्टी. तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की फिगर याद कर लो. व्हाट इज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20%. नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट. हाँ, आप कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालिफाइड हो. As you wish. That will show your enhanced knowledge in the examination. नहीं कटेंगे. लिखोगे तो ज्यादा मिलेंगे भी नहीं. उसका आंसर CW एक्ट के अकॉर्डिंगली देना है. आप ज्यादा लिख दोगे तब भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आप नहीं लिखोगे तो कटेंगे नहीं. ये फॉर श्योर है. ठीक है. अब प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट ब्रिंग्स डिसरिस्प्यूट टू द प्रोफेशन. ये तो बिना देखे बोल सकते हो आप. क्लॉज 2 पार्ट 4 शेड्यूल 1 241 करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट वन. अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर हिज पर्सनल एडवांटेज shares confidential information. Practicing cost accountant for his personal advantage share confidential information. 112 clause 1 part 1 schedule 2. A firm of cost accountants undertake cost audit of a company. The audit work is conducted by one of the partners and two assistants. Report is however signed by another partner. Not guilty. क्योंकि हमने सेकंड क्लॉज में क्या पढ़ा था? Either by you or by your partner or by your employee or by any other partner. Even if one partner is there, or even if assignment was done by your employee also, you are guilty or not guilty? Not guilty. So it's fine. Next point. As a practicing cost accountant accepts an assignment previously held by what? Actually, हाँ, ये वाला पॉइंट मेरे को आपसे रेज करना था. एक्चुअली आपके जो 7 क्लॉजेस दिए हुए ना पार्ट 1 में, वो एक्चुअली 12 है. इन रियलिटी देयर आर हाउ मेनी क्लॉजेस? 12. उसमें क्लॉज 8 आता है, 811. वो किसके बारे में होता है कि अगर आप किसी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट हो एंड यू हैव बीन अपॉइंटेड बाय रिप्लेसिंग समबडी एल्स एज एन इनकमिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद होम? आउटगोइंग.
Reason being very simple, sir. Why should I contact? The reason is very simple. The things which may have happened with him should not happen with you. There might be a reason that why he left. Suppose उसका cost audit fees नहीं pay किया, तो do you give a guarantee that you will get your fees, or you may not? So don't you think that you may observe or you have to observe the objections raised by the which auditor? Previous audit. तो ये एक rule है कि the current auditor must communicate with what? Previous auditor to understand the objections and the reasons why he left. Was he removed or did he resign? What is the reason behind resign? Why someone would like to resign? It means you might be forced to do something which you wanted to or did not want. So the same thing may happen with you as well, na? So don't you think that you should consider his objections before accepting? Yes. So actually the rule is कि you must communicate. Actually वो 811 है, but आपके यहाँ पे 7 दिए हुए हैं, old में भी, सिलेबस में भी और न्यू सिलेबस में भी. तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग एक्स्ट्रा होप्स की एक्स्ट्रा कर लो व्हेन नथिंग इज गिवन इन द मटेरियल. ये तो मटेरियल में अभी डिसिप्लिन के बारे में भी नहीं दिया. आई ओनली टोल्ड यू. तो व्हेन आई सॉ बिलो, आई सॉ द चैप्टर इज ओवर एक्चुअली. ओनली फ्यू सेक्शंस आई हैव टू टेल यू. नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. A practicing member or a firm maintains branch office in India under the separate charge. अच्छा, ये भी एक रूल है, मैं तुम्हें बताता हूँ. अगर आपका एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच के अंदर 50 किलोमीटर से ज्यादा का डिफरेंस है, कितना, तो सेकंड ब्रांच ऑल्सो शुड बी हेडेड बाय अ सीएमए. इफ द ब्रांच इज विद इन 50 किलोमीटर ऑफ रेडियस, देन इन दैट केस इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी हेडेड बाय द अनदर सीएमए. मतलब मान लो मैं सोल प्रोप्राइटर हूं और मेरी दूसरी ब्रांच वरंगल में है. अब बताओ, कैन आई सोलली मैनेज बोथ द ब्रांचेस? नो. तो मेरे को पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी. बट इफ आई एम हैविंग वन ब्रांच इन पटानचेरू एंड अनदर ब्रांच इन वनस्थलीपुरम, इज इट विद इन 50 किलोमीटर्स? यस. देन इन दैट केस डू आई नीड टू गेट इट हेडेड बाय एनीबडी एल्स? नो. ये सारे रूल्स एक्चुअली सीए एक्ट में हैं, but unfortunately I'm unable to see it in your what? CMA Act. So let me just see कि are they or have they given this in your questions or not. तो देखो, Constitution, if you want I will make you write the chart like वो वाला कि Schedule 1 है तो इधर Schedule 2 है both, वो वाला लिखवा दूंगा चार्ट. क्योंकि I think उसके अलावा either तो pages are missing, 115 के बाद 116 ही है, तो no pages are missing, but I don't know why they have removed it, because that is very बिग इंफॉर्मेशन यू शुड नो एज अ प्रैक्टिसिंग सीएमए. क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको किसके साथ डील करना है. आपको यही नहीं पता आपको किसके साथ डील करना है, बीओडी के पास जाना है या मुंह उठा के डीसी के पास जाना है, क्योंकि दोनों की पावर्स में बहुत डिफरेंस है. बोथ द पीपल हैव डिफरेंट पावर्स. बट आई विल मेक यू राइट, डोंट वरी. लेट्स डू दिस एक्ट. व्हाट इज दिस? अच्छा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. इफ यू रिमेंबर, नॉट अ फेलो एक्टिंग एज अ फेलो है. मैंने तुम्हें ऑलरेडी कवर करवा दिया ये सेक्शन. पढ़ो क्या लिखा. अ पर्सन नॉट बीइंग अ व्हाट? मेंबर. मतलब आप इंस्टीट्यूट के मेंबर ही नहीं हो, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट यू आर अ मेंबर, और यूजिंग द डेजिग्नेशन ऑल्सो व्हाट? मतलब आप अपने आप को प्रैक्टिसिंग सीएमए भी दिखा रहे हो और मेंबर भी दिखा रहे हो. ठीक है. देन और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यू आर अ मेंबर बट नॉट हैविंग अ सीओपी, रिप्रेजेंट दैट ही इज इन विथ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस एज अ कॉस्ट अकाउंट. तो इनको पनिशमेंट क्या है? फर्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग दिस मिस्टेक यू विल बी पनिश्ड विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000. मेरे से 20 टाइम्स ले लो, फाइन देखो कितना, 1000. मतलब वो 2 करोड़ का टर्नओवर कमा लेगा बाय शोइंग दैट कि आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट. और अगर आईसीएमए इंस्टीट्यूट को पता भी चल गया तो फाइन कितना है? आई वुड लव टू डू द क्राइम. फाइन होना चाहिए था 10 टाइम्स द रेम्युनरेशन रिसीव्ड. तब जाके अपनी हवा टाइट होती कि अगर मैंने 1 लाख का रेम्युनरेशन लिया, आई हैव टू पे अ फाइन ऑफ व्हाट? 10 लाख. यहां पे फाइन देखो कितना चिल्लर है, 1000. और देखो सेकंड टाइम तो यू विल डाई. ऑन विच कन्विक्शन? यू विल बी इम्प्रिजन्ड विच में एक्सटेंड अप टू वर्ड, वो भी एंड नहीं है. और यू मे गेट अवे बाय गिविंग अ फाइन अप टू 5000. हार्ट अटैक आ रहा है इतनी फिगर देख के. मतलब मेरे ख्याल से तुम्हें क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है. गेट नॉन क्वालिफाइड and tell to the people that you are qualified. What if the ICMA institute will find you guilty? 1000 रुपीज का फाइन देना. ऐसा करे तो नीचे गिर जाते हैं. करेक्ट है नहीं है सर?
सीधी सी बात है सर, इतने पैसे ऐसे करे तो गिर जाते। और सेकंड टाइम पे क्यों क्या, अरे देखो अगर एंड होता ना, आई एम स्टिल विद इंस्टीट्यूट, कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा एंड, बट यहां पे भी क्या डाल दिया, तो भैया फाइन देके ही निकल जाओ 5 बार। थर्ड टाइम करो फिर 5,000, 50,000 का बिजनेस करो 5,000 फाइन दे रहे हो, तो एज अ डोनेशन 10% डोनेशन जा रही है। मतलब इनके ना फाइन से ये ना ये एक्चुअली एक्ट कौन से 1959 की पेनल्टी है ये, अभी तक चेंज ही नहीं हुई। 1959 से 2023 आ गया, अभी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा गया। मेरे ख्याल से दे शुड हैव एडेड 3 more zeros, तब तो मजा भी आए कि 10 lakhs का फाइन है और इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और फाइन अप टू 5 lakhs, कुछ तो भी मजा आना ना। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो हु इज गोइंग टू गेट फाइन, तो अपन इसे चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। बताओ, यू आर नॉट अ मेंबर, you are a member. If you are not a member, first of all, so you are saying that you are a member plus you are also a what? COP holder plus you are showing that you are a which accountant? Cost accountant. If you are a member but you are not holding a what? COP, but you are using the designation called what? Cost accountant. दोनों केसेस में फर्स्ट फाइन कितना है? अरे तुम तो भूल ही गए, फाइन में एक्सटेंड टू 1,000 है, ऑफ नहीं है, एक्सटेंड 1,000 तक जा सकता है। मतलब अगर हम चाहें, अगर हमने छोटा चिन्ना फ्रॉड किया है तो हम 500 रुपए देके भी निकल सकते हैं। भाई साहब सीरियसली नहीं, फाइन में एक्सटेंड अप टू, डन। चलो नेक्स्ट वन, सेक्शन नंबर 25, पेनल्टी फॉर यूजिंग द नेम ऑफ व्हाट? काउंसिल अवॉर्डिंग डिग्री ऑफ व्हाट? मतलब यू आर नॉट अ मेंबर बट यू आर टेलिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट कि मैंने कुछ डिप्लोमा किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट से। यू आर नॉट यूजिंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट डेजिग्नेशन। इफ यू आर यूजिंग इट, यू विल फॉल अंडर सेक्शन नंबर 24, बट इफ you are using the institute's name, then you are falling under what? 25. Now read this. Save as otherwise provided in this section, no person shall use a name or a common seal which is identical with the name or common seal of what? Institute, or so nearly resembles it as to deceive, to cheat, as is likely to deceive the public. Award any degree, और यही पे save as other, no person shall award any degree or diploma or certificate or bestow any designation which indicates or purports to indicate the position or attainment of any qualification or competence in cost accountancy similar to that of a member of institute or seek to regulate in any manner whatsoever the profession of. मतलब सिंपल सी बात है, you are not allowed to use the name of what? Institute, neither its common seal nor its name, कि I am a qualified person from कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आंसर इज नॉट अलाउड। एनी पर्सन, अब इसका फाइन भी तुम देखना, तुम एनी पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी विल बी फनिश सेम may extend to 1,000 and on subsequent may extend to 6 months or with a fine which may extend to 5,000 or with what? Both. Omitted with effect from, ओ भाई साहब फिर लिखा क्यों है ये सेक्शन ही? ये 2022 का मटेरियल है तुम्हारा और ये 2006 में ओमिट हो चुका है। अच्छा थर्ड पॉइंट ओमिट हुआ है, पूरा सेक्शन नहीं, बट मेरे ख्याल से ये भी ओमिट हो जाना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। और आइदर ओमिट होना चाहिए या रिवाइज होना चाहिए। If the central government is satisfied that any diploma, certificate or any designation granted or certified by any person other than the institute were proposed to be qualification in cost accountancy but which in the opinion of central government falls short of standard of qualification prescribed for cost accountant, does not in fact indicate or purport to indicate the position or attainment of any qualification or competence in cost accountancy similar to that of a member of institute, it may by notification in the gazette and subject to such conditions may think fit to impose or declare that this section shall not apply to such diploma or certificate or designation. मतलब in case you have done any equivalent course or equivalent degree and the Institute of Cost Accountant of India thinks that your degree is little bit equivalent to the cost and management accountancy, so then in that case this section may not apply you on, मतलब you may not be found guilty of any such kind of thing, then in that case you are allowed to use the name. Did you get it? But that is purely discretionary power of whom? Institute.
तो either you are violating section number 24 or you are violating section number 25. तो तुम्हारा फर्स्ट कन्विक्शन का फाइन है अप टू ₹1000 और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन का फाइन है imprisonment up to 6 months और fine up to 5,000 और both. Section 26 companies not to engage in cost accountancy, ये तो अपने को पता है, ये disqualification under section 141 subsection 3. Are you allowed, in which way you can practice in India? या तो sole proprietor or a partnership firm or a LLP. Are you allowed to practice in the name of body corporate? You are neither allowed under CMA Act or nor allowed under Companies Act. No company whether incorporated in or elsewhere shall practice as a word cost accountant. Next one, any contravention. अब देख लेते हैं इसका फाइन क्या है. Oh, 2000 सब्सिक्वेंट में अच्छा इम्प्रिजनमेंट भी रिमूव कर दी. बट यहां पे एक चीज अच्छी है, कन्विक्शन 5,000 है, मतलब फ्लैट है, नॉट एक्सटेंड टू. इट मीन्स यू विल पे 5,000, यू मे नॉट पे 5,000, ऐसा कैसे. एंड फाइन अप 2,000. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पेनल्टी एंड अबव पेनल्टीज? वहां पे वर्ड था एक्सटेंड्स टू 5,000. एक्सटेंड्स मतलब मे गो अप टू 5,000, बट यहां पे टू 5,000 मीन्स यू हैव टू पे द 5,000 और 1,000. Extend word is removed. For the removal of doubt, it is hereby declared that company shall include any limited liability partnership which has company as its partner for the purpose of what? This section. एक second. But this is accepted under the Companies Act. You can make what? LLP. मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्यों लिखा है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर LLP वर्ड भी आता है. तो except LLP, you cannot make any other company or body corporate. So we are done with 3 sections. What are the 3? 24, 25, 26. 27. Unqualified person not to sign what? Documents. So when we did not allow anyone to practice in our name, like in the clause number 1. Please tell me the clause number 1 of part 1 of schedule 1, 111. So obviously when you do not allow anybody to practice, you will not allow any unqualified person to sign the document. If you found guilty, हाँ यहाँ पे फाइन अच्छा है, punishable on first conviction not less than may extend to 1 lakh, and in the event of second or subsequent the imprisonment of a term which may extend to 1 year or with a fine which is not less than 10,000. तो 5,000 बन गया क्या 10,000 and 1 lakh क्या बन गया भैया 2 lakh. तो डबल कर दिया. And or imprisonment up to क्या ऐड कर दिया 1 year. तो this is a conviction in case of section number 27. Did you get the point? And ये क्या है 28 of the cost and work offenses by whom? Companies. If a person committing any offense under this act is a what? Company. The company as well as every person in charge of the company or responsible to the person at the time of commission of the offense shall be deemed guilty of offense, shall be liable to be proceeded and punished accordingly, provided that nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment if he proves that offense was committed without his knowledge and he exercised the due diligence to prevent. Notwithstanding anything contained in subsection where an offense under this has been committed by the company and it is proved that offense has been committed with the consent or contravention, then director, manager, secretary, other officers, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of offense, shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. But nowhere punishment has been told. So when you can escape from the punishment under section 28? If you can prove that कि that offense was done without my knowledge. अगर आप innocent prove कर लोगे तो you may be. But there is no punishment has been told in the section number 28. अब बताओ 24 क्या था? Not a member, acting as a member, being a member, not a cost accountant but acting as a cost accountant. Punishment: first up to 1,000, second time imprisonment up to 6 months or fine up to 5,000 or more. 25th. What is section number 25? You are misusing the name of what? Council. Same fine. What is section number 26? You cannot incorporate the practicing profession in the name of what? Company. What is the section number 27? Allowing any unqualified person to sign. इसकी penalty बताओ. Minimum 5,000, maximum 1 lakh. First conviction. Second onwards, imprisonment up to 1 year or minimum 10,000, maximum 2 lakhs.
28. If the company found guilty of doing any offense under this act, every officer, secretary, manager, MD will be liable to a penalty. But if they can prove that was done without their what? Negligence or without their knowledge, then in that case, will there be any penalty or no penalty? No penalty. And let's wind up with the section number 29. What is that 29? No person shall be prosecuted under this act except a complaint made by or under the order of council or of the central government. ये केस लो क्या है? ABC, a public limited company manufacturing product, comes under non-regulated sector. How many? 33, right? 33 non and classified products under CTA. The total turnover of the company is 159 crores. बताना cost audit के limits क्या थे unregulated sector के? Overall turnover 100 crores or more, and turnover from such goods and services for which cost records are required shall also be 35 crores or more. तो भैया ये देखो, CTA हेडिंग का वेस्ट एंड स्क्रैप का टर्नओवर इज 46, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर का टर्नओवर इज 57, बाय प्रोडक्ट का टर्नओवर इज 56, टोटल इज 159. कंपनी सीक्स योर ओपिनियन वेदर प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड. कॉस्ट रिकॉर्ड्स का तो प्रोविजन बहुत सिंपल था. इफ द टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 करोड़, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मैंडेटरी हैं. एंड ऑडिट इन द व्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट ग्रुप्स इंडिविजुअली टू बी बिलो व्हाट 100. तो do we need to see individually or put together? Overall annual turnover should be more than 100 crore. तो condition number 1 तो satisfied है, but they are not clarified. अच्छा, ये देखो, they are asking you to draft what? Letter to the client. तो क्या letter लिखोगे आप? To the managing director, dear sir, this has been reference to the query wide your letter. My opinion on your query. अब बताओ, आप क्या advice दोगे? Cost records are mandatory or not mandatory? So as the turnover of the main product manufactured by the company is greater than equals to, and the total turnover is what? Company. यहाँ पे 100 crores क्यों लिया उन्होंने? अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ. And greater than equals to 100 crore, the provision of maintenance of cost records and audit thereof is what? Applicable to the companies as per the provision. मेरे को ये बताओ, रूल नंबर 3 क्या था? Cost record. Rule number 4. Further waste and scrap are generated out of manufacturing process. For the payment of duty, it gets classified under the CTA code. It is not a product and hence cost audit of scrap is meaningless and not applicable. Therefore, the cost audit is not applicable to waste and scrap as generated. Same is the case by the byproduct. तो यहाँ पे total क्या थे? Byproduct और waste निकाल दिया. इसका भी निकाल दिया. इसका भी. What is 57? Products manufactured. Now next point is what? It is not a product by which but comes out of manufacturing. In this case, byproduct is also sold without any further processing. The realizable value is usually credited to the cost of production. In such case, preparation of separate cost statement does not arise. However, whether there is a further processing of byproduct being sold, then there would be a separate cost statement to arrive at a profit loss. Such cost statement would form a part of cost audit. Hope you will find the above in order. थैंकिंग यू. लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है ऐसा. अच्छा, कंपनी सीक्स योर व्हाट ओपिनियन. सीटीए ना वो होता है एक कस्टम टैरिफ एक्ट, समथिंग लाइक दैट. कस्टम टैरिफ एक्ट और सेंट्रल एक्साइज एक्ट. एक सेकेंड. सीटीए इट इज कस्टम टैरिफ एक्ट. हाँ, कस्टम टैरिफ एक्ट सीटीए. एक सेकेंड. इट हैज टू बी कस्टम टैरिफ एक्ट. एक बार आप चेक कर रहा, मेरा नेट नहीं चल रहा. कस्टम टैरिफ एक्ट ही है ना. वही सीटीए मतलब कस्टम टैरिफ एक्ट होता है. एक्चुअली क्या था, बिफोर जीएसटी ये सारे अपने को होते थे ना, कस्टम, एक्साइज एंड ऑल. अभी भी कस्टम तो है. तो सीटीए के अंदर देयर आर सो मेनी आइटम्स व्हिच हैव बीन क्लासिफाइड. वो अपन मैंने बोला ना, वी हैव सो फार नॉट डन दैट चैप्टर कॉस्ट रिकॉर्ड्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cost records will do. There I will tell you CTA headings and non-CTA headings, right? So that brings an end to your chapter. What is the name of the chapter? Professional ethics. बोलो. हाँ. हाँ. हमें ओवरऑल ही लेना होता है,
लेकिन उसके अंदर दैट प्रोडक्ट हुज कॉस्ट रिकॉर्ड्स टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 crores, then the cost audit becomes what? Compulsory. But that clarity is not given. So this question is not on asking you whether cost audit is required or not. This question is asking your opinion कि whether the company should maintain the which records? Cost records. और by product or joint products को and waste products को why we have not considered? Because they are to be sold in the market without any further processing. तो for that they are not considered as a part of what? Turnover. तो total 159 में 49 गया, 56 गया, बचा कितना? 57. Due to that reason cost audit is not required. Why not required? क्योंकि overall turnover to be considered should be what? 100 crores or more. तो हम लोग बाय प्रोडक्ट और वेस्ट का प्रोडक्ट का टर्नओवर को कंसीडर ही नहीं कर रहे. तो ये क्लैरिटी आपको आएगी जब अपन कॉस्ट रिकॉर्ड्स चैप्टर पढ़ेंगे, राइट है ना? कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स विच इज अवर आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर. नहीं, ये तो है. अभी एक काम करेंगे, एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करते हैं. क्या बोलते हो? ठीक है, ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर, एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स आर गोइंग टू कम. ये वाले प्रैक्टिकल्स आई एम टॉकिंग, ये देखो, ये सारे प्रैक्टिकल्स है. दिस इज व्हाट योर चैप्टर वेयर यू विल कम टू नो अबाउट व्हाट इज सीटीए. बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बट डोंट वरी, इतना आपको करना नहीं है. मैं तुम्हें स्क्वीज करके लिखवा दूंगा व्हाट चैप्टर यू हैव टू डू. द नेम ऑफ द चैप्टर इज दिस. तो कल अपन ये स्टार्ट करते हैं फिर, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2000. और आई विल लुक फॉर एनी स्मॉल theory chapter which can be wound up in 1 or 2 days, and I'll make you write the chart also tomorrow. ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं. नो क्लास नाउ. हाँ जी.